अस्सलामुअलैकुम। आज हम पैराफ्रेजिंग के बारे में बात करेंगे। Today we would like to talk about paraphrasing. Good evening all of you. If you are new to the channel, please subscribe to my channel and then do comment and like below. Paraphrasing is when you take an original idea and rewrite it to express the same meaning but in a different way. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आपने you have to change it into your own words, ठीक है। So why do you need to paraphrase? Paraphrasing is important to the IELTS task 2 because your introduction paragraph is basically a paraphrase of the essay prompt. You will need to rewrite the essay prompt in your own words to introduce your essay, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अगर पैराफ्रेजिंग आपने नहीं की, ठीक है, जो आप वर्ड्स लिखते हैं क्वेश्चन में जो लिखे होते हैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स आप रिपीट करते हैं तो वो वर्ड काउंट में नहीं आता, दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ड काउंट, ठीक हो गया। एक ये रीज़न भी है, तो इसी वजह से पैराफ्रेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट। या हमारे पास 3 different ways हैं through which we can paraphrase the question, right? The first one is use a synonym, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वाला, ठीक है। तो synonym किस तरह क्वेश्चंस में एक वर्ड्स देखें, इसकी आप synonyms ढूंढ के आप उसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग इसका synonym है fascinating, curious and amusing are all synonyms. But some synonyms can have a slightly different meanings. For example, fascinating has a stronger meaning than interesting. So be careful when using synonyms. We need to make sure that the words we are using convey the same level of meaning as the original. ठीक है, इस बात की तो समझ आ गई ना अंग्रेज़ी की। ऐसा ना हो कि आप वर्ड्स की synonym जो भी आपको सामने आए वो लिख लें। अब एक है यहाँ पे मैं एक पैराफ्रेजिंग एक सेंटेंस है, मैनी पीपल थिंक दैट कार्स शुड बी अलाउड इन सिटी सेंटर्स, ठीक है, सिटी सेंटर्स, ठीक हो गया। इसको हम पैराफ्रेज करके इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैनी पीपल बिलीव दैट मोटर व्हीकल्स शुड बी बैन्ड इन अर्बन एरियाज। एग्जैक्टली सेम चीज़ है लेकिन जो वर्ड्स है वो मैंने चेंज किए। थिंक को मैंने बिलीव में चेंज किया, कार्स को मैंने मोटर व्हीकल्स में चेंज की, शुड नॉट बी अलाउड को मैंने शुड बी बैंड किया। नीचे हम आते हैं, सिटी सेंटर्स को मैंने अर्बन एरियाज़ में किया, ठीक है। इसी तरह मोर सिनोनिम्स टू ऐड टू योर वोकैबुलरी, चेंज द वर्ड फॉर्म्स, दिस इज़ अनदर वे टू पैराफ्रेज, ठीक है। चेंज द वर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, इज़ टू चेंज वर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल चेंजिंग अ नाउन इनटू a verb into a noun, or an adjective into a noun, or vice versa, right? Vice versa. Examples: many people find watching tennis interesting. Interesting क्या है, adjective है। पैराफ्रेज करके मैं इसको interest बना देता हूँ, ठीक है। Many people have an interest in watching tennis. Exactly the same meaning, but I changed adjective into a noun, right? इस केस में इंटरेस्ट जो है ये नाउन है, देखें। इस केस में इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है। नीचे आते हैं एग्जांपल्स पे। ओरिजिनल जो है वो ये है, सम पीपल थिंक फेसबुक इज़ एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। इन्वेजन क्या है, नाउन है। पैराफ्रेज करके मैं क्या बोलूँगा, सम पीपल थिंक फेसबुक हैज़ इन्वेडेड आवर प्राइवेसी। इन्वेडेड क्या हो गया, verb हो गया, ठीक है। This is the second method. Third method is change the sentence structure. A third way to paraphrase is to change the sentence structure. This could be by changing the sentence from passive to active or vice versa, right? Or changing the order of the clauses. Let's have a look. Active to passive. Original क्या है, the hurricane destroyed the city. Paraphrasing करके the city was destroyed by the hurricane. Okay, in the above sentence the subject hurricane became the object and the object city became the subject. To be passive we also change the verb destroyed into past perfect
was, were plus past participle. ठीक है. Passive to active, में चेंज कर सकते हैं. The public transport system was developed by the city council. ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में है. City council developed the public transport system. In the sentence above, the subject, ये सारा आपको पता है, इसकी दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. Order of the clauses के order जो है उसको चेंज कर सकते हैं. For example, it is difficult to say whether the economy will improve. The two clauses are, it is difficult to say, यहाँ तक, whether the economy will improve. So one way to paraphrase is by changing the order of the clauses, right? So order of the clauses किस तरह करेंगे? Whether the economy will improve, comma, it is difficult to say. Let's look at another example. During the summer, many people visit the temple. So many people visit the temple during the summer, right? इसी तरह आप एक paraphrasing जो है जनरल, ये आपको एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे. Nowadays, more and more foreign students. यहाँ पे मैंने एक टॉपिक से लिया है. Second sentence is undoubtedly true. Okay. ये कुछ और examples हैं. Nowadays, more and more foreign students are going to English-speaking countries to learn the international language English. In recent times, a growing number of, इसको मैंने क्या किया? Recent times, a growing number of international students are learning English in English-speaking countries. ठीक है? The second paragraph मैंने कैसे किया? Second one sentence, sorry. It is undoubtedly true that studying English in English-speaking countries is the best way, but it is not the only way to learn it. ये original sentence है. इसको मैंने paraphrase करके, although it is beneficial to learn English in a country where it is natively spoken, there are other effective ways to learn it. ठीक है? Sentence number 3. To what extent do you agree or disagree with the above statements? तो यहाँ पे paraphrase करके, I agree with the statement to a large degree. ठीक है? So this is all about paraphrasing, and that's how you have to do, right? I think it is very helpful for you, and if you like it, do like this video and do subscribe to my channel, and comment below if you want me to make such videos for you in future. Just comment below. Comment is very important, you know, guys. You don't do that. Okay, please subscribe and comment.